1 Sceptical, adjective. शक करने वाला, शक्की. Not easily convinced, having doubts or reservations. Synonyms: dubious, doubtful, having reservations, doubting, questioning, cynical, distrustful. 2 Tepid. नीम गर्म. Not hot and not cold. Synonyms: half-hearted, lukewarm, uneager. 3 Veil, verb. घूंघट, हिजाब, पर्दा. Cover with a veil. Synonyms: envelop, surround, swathe, enfold, cover, cover up, conceal, hide, secrete. 4 Ablaze, adjective. आतिश गिरफ्ता, जलता हुआ, आग से रोशन. Burning fiercely. Synonyms: alight, aflame, on fire, in flames, flaming, burning, blazing, raging, fiery. 5 Devastate, verb. बर्बाद करना, उजाड़ना, तबाह करना. Destroy or ruin. Synonyms: destroy, ruin, leave in ruins, wreck, lay waste, wreak havoc on, ravage. 6 Anxious, adjective. बेताब, घबराया हुआ, बेचैन. Feeling or showing worry, nervousness, or unease about something with an uncertain outcome. Synonyms: worried, concerned, apprehensive, fearful, uneasy, ill at ease, perturbed, troubled. 7 Surreal, adjective. गैर हकीकी, गैर मंतिकी ख्यालात. Having the qualities of surrealism, bizarre. Synonyms: unreal, bizarre, unusual, weird, strange, freakish, unearthly, uncanny. 8 Desolate, adjective. छोड़ जाना, साथ छोड़ना, वीरानी. Of a place, uninhabited and giving an impression of bleak emptiness. Synonyms: barren, bleak, stark, bare, dismal, grim, desert, waste, arid, sterile. 9 Formidable, adjective. डराना, खौफनाक, हौलनाक. Inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. Synonyms: intimidating, forbidding, redoubtable, daunting, alarming, frightening, terrifying, petrifying. 10 Stunted, adjective. नशोनुमा रोकना. Having been prevented from growing or developing properly. Synonyms: small, little, tiny, undersized, undersize, diminutive, dwarf, dwarfish, pygmy. You mean they actually read books in Balochistan? My Lahori friend sounded skeptical. For him, as for most Pakistanis, Balochistan is a war zone where people want guns, not books. But, just back from the 2023 Gwadar Book Festival, I told him he was not only wrong but as wrong could be. Young Baloch are thirsty to know. They buy nearly 3 times more books than sold at literary festivals in Karachi, Lahore, or Islamabad. More importantly, this festival, and others I have attended in Balochistan, was organic, energetic, and unfettered. Thankfully, I neither saw nor heard support for BLA/BLF terrorists. With a shoestring budget, staffed by young volunteers, and held inside a rundown high school compound, the GBF was unlike the tepid, uninspiring Karachi-Lahore type of lit fests. Held in 5-star hotels with abundant corporate and embassy funding, these are feel-good events with lots of self-congratulations, but topics and speakers deemed controversial are carefully excluded. My friend was pleasantly surprised to learn that more female students than male students asked questions after my Gwadar University lecture. I had long complained to him that, over the past 35 to 40 years, female students at my old university in Islamabad have taken up the veil and turned into passive listeners, rarely summoning the courage to stand up and ask. But if my well-read, well-traveled, and well-meaning friend was so consistently wrong, what's going on in other minds? When news is blacked out, good news and bad news both stop. For fear of weakening CPEC, authorities are hypersensitive about negative news. Except for that cleared from above, print and TV media may not touch Balochistan on anything.
Designers of the Gwadar CPEC project had only roads and the port in mind, not Gwadari's welfare. None has underscored this sad fact more brilliantly than a fisherman's son, Maulana Hidayat Urahman of Gwadar's Haq du Tariq. At last year's Asma Jangir conference in Lahore, he stole the show. When a mouse found its way into a halwai's shop in Lahore, he thundered, Pakistani media was set ablaze. But when dead bodies appear by roadsides in Balochistan, none dare whisper. The redoubtable Maulana, also a Jamaat-e-Islami leader, is currently under arrest and charged with murder. People say he is at the center of a tussle between two agencies, one of which wants him in, the other out. As an outsider to Gwadar, last visit circa 1960, I could not figure out which of a multiplicity of security organizations has the top charge. Each protects its own turf and probably has its own extra salary income sources. Along all highways and major roads, hilltops bristle with Omani-style forts and fortifications. Bunkers and checkposts are everywhere. Passing through the dry-as-dust town of Turbet, I wondered what made the local economy tick. Answer: smuggling. No attempt, not even the flimsiest, is made to hide the free flow of petrol, oil, and LNG from across the Iranian border. On their way to Karachi and parts of Punjab, pickup trucks loaded with fuel-filled jerry cans are the largest fraction of road traffic. Luxury coaches to Karachi, I was told, have a tank under the chassis containing 8 to 10,000 liters. Pre-assigned cuts warm pockets along the way. One fact, more than any other, strikes a visitor instantly. The men who designed New Gwadar wasted not a moment in worrying about Gwadaris, the original inhabitants. Pushed away from the harbor, areas permitted for their fishing keep shrinking. A proposed new road will devastate the local boat construction industry. The old town looks like a dump, but Rawalpindi doesn't care. Those building the port, the Chinese, are invisible. Locals humorously call them Yajuj-Majuj. Instead of romping around the incredibly beautiful beaches, they live inside that which from afar looks like a prison camp. Once the project is over, I am sure they will be anxious to get back home and savor freedom. A near-accidental visit to the Gwadar Institute of Technology turned out to be a surreal experience. A plaque says this supermodern institution was handed over by China in 2021. The auditoriums, lecture halls, classrooms, and laboratories are picture-perfect. I counted over 60 training simulators for cranes, gantries, heavy vehicles and forklifts. Later, upon Googling, the per-piece price ranged from $30,000 to $50,000. All are spanking new, still under plastic covers. On this vast but desolate campus there are no teachers, students, or staff, only chowkidars. No one has a clue of how to get things moving. This is development gone mad. But who is to blame and who will foot the bill? Was there a PC-1 planning document, and what's in it? Still, Gwadar's development will doubtless benefit those who have always won. Vast areas have been cordoned off with razor wire for various official organizations and their housing schemes. Colonization, of course, is too strong a word to use here. Let's just say it's the familiar desire for officer colonies. An unexpected encounter between Quetta and Gwadar led to a 3-hour conversation with a junior army officer, a Kakul graduate. Brilliant and likable, he engaged the TTP in firefights in South Waziristan. Well, how do they compare against BLF/BLA? He laughed, these are criminals and adventurists. But TTP are formidable hardcore terrorists. He then paused, he'd rather fight elsewhere where he would be liked by people, not here. Intriguing. This begged my question, why don't you people just go back home? Leave law and order to the local police and Baloch levies? He sighed. Yes, this should happen sooner rather than later. But both are under-equipped, under-trained and, being locals, have families that terrorists can target. This young officer doesn't want to be seen as part of an occupation force. Though troubled, he still loves the army.
Those at the center of power imagine Balochistan as some faraway, barren land of tribals. Far too rich to be left alone, they think it must be governed from afar. Stunted development springing from this regressive mindset is driving Pakistan back onto the rocks. Balochistan, and for that matter the concept of Pakistan, will have to be re-understood in very new ways. Else history will exact its awful toll as it did once. But next time around, the price could be still steeper. The writer is an Islamabad-based physicist and writer. Published in Dawn, March 11, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. आपका मतलब ये है कि वो वाकई बलूचिस्तान में किताबें पढ़ते हैं। मेरे लाहौरी दोस्त को शक था। उनके लिए और ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए बलूचिस्तान एक जंगी इलाका है जहां लोग किताबें नहीं बल्कि बंदूकें चाहते हैं। लेकिन 2023 के गवादर बुक फेस्टिवल के फौरन बाद मैंने उनसे कहा कि वो न सिर्फ गलत हैं बल्कि इतने ही गलत भी हैं जितना गलत हो सकता है। नौजवान बलोच जानने के प्यासे हैं। वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अदबी मीलों में फरोख्त होने वाली किताबों से तकरीबन 3 गुना ज्यादा किताबें खरीदते हैं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये फेस्टिवल और दीगर मैंने बलूचिस्तान में शिरकत की है नामियाती, मुतहर्रिक और बेलगाम था। शुक्र है कि मैंने न तो BLA/BLF के दहशतगर्दों की हिमायत देखी और न ही सुनी। नौजवान रजाकारों के ज़ेर इंतज़ाम और हाई स्कूल के अहाते में मुनक़िद किए जाने वाले जूतों की तारों के साथ GBF कराची लाहौर की तर्ज के लाइट फेस्टिवल से मुख्तलिफ था। 5 स्टार होटलों में मुनक़िद होने वाले जिनमें कारपोरेट और सिफारत खाने की वाफिर फंडिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा खुद को मुबारकबाद देने के साथ अच्छा महसूस होता है, लेकिन मुतनाज़ा समझे जाने वाले मौज़ूआत और मुकर्ररीन को एहतियात से खारिज कर दिया जाता है। मेरे दोस्त को ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि मेरे ग्वादर यूनिवर्सिटी लेक्चर के बाद मर्द तालिब इल्मों के मुकाबले में ज़्यादा तालिबात ने सवालात पूछे। मैंने तवील अरसे से उनसे शिकायत की थी कि गुज़िश्ता 35-40 सालों में इस्लामाबाद में मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी की तालिबात ने निकाब उठाया है और गैर फ़ाल सामीन में तब्दील हो गई हैं और शायद ही कभी खड़े होने और पूछने की हिम्मत होती है। लेकिन अगर मेरा पढ़ा लिखा, अच्छी तरह से सफ़र करने वाला और अच्छे दोस्त मुसलसल गलत थे, तो दूसरे जहनों में क्या चल रहा है? जब खबरें ब्लैक आउट हो जाती हैं, तो अच्छी खबरें और बुरी खबरें दोनों रुक जाती हैं। CPAC के कमज़ोर होने के खौफ से हुक्काम मनफी खबरों के बारे में इंतहाई हसास हैं। सिवाय इसके कि ऊपर से वाज़े किया गया है, प्रिंट और TV मीडिया बलूचिस्तान को किसी चीज़ पर नहीं छू सकता। गवादर CPAC मंसूबे के डिज़ाइनर्स के जहन में सिर्फ सड़कें और बंदरगाह थी, गवादरियों की फलाह व बहबूद नहीं। गवादर की हक 2 तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहीगीर के बेटे मौलाना हिदायत रहमान से ज़्यादा इस अफसोसनाक हकीकत को किसी ने उजागर नहीं किया। गुज़िश्ता साल लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये शो चोरी किया था। लाहौर में एक हलवाई की दुकान में जब एक चूहा दाखिल हुआ तो वो गरज उठा, पाकिस्तानी मीडिया को आग लगा दी गई। लेकिन जब बलूचिस्तान में सड़कों के किनारे लाशें नजर आती हैं तो कोई सरगोशी करने की हिम्मत नहीं करता। जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना इस वक्त गिरफ्तार हैं और उन पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। लोगों का कहना है कि वो 2 एजेंसियों के दरमियान कशमकश के मरकज में हैं, जिनमें से एक उन्हें अंदर लाना चाहती है और दूसरी बाहर। गवादर के एक बैरूनी शख्स की हैसियत से 1960 के आसपास का आखिरी दौरा मैं ये नहीं समझ सका कि सिक्योरिटी इदारों में से किसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। हर एक अपने मैदान की हिफाजत करता है और शायद इसके पास अपनी इजाफी तनख्वाह आमदनी के जराए हैं। तमाम शाहराहों और अहम सड़कों के साथ पहाड़ियों की चोटियां उमानी तर्ज के कलों और कलों से भरी हुई हैं। बंकर और चेक पोस्टें हर जगह मौजूद हैं। तुर्बत के खुश्क और गर्द गुबार वाले कस्बे से गुजरते हुए मैं सोच रहा था कि मकामी मईशत को किस चीज ने मुतासिर किया है। जवाब: स्मगलिंग। ईरानी सरहद के पार से पेट्रोल, तेल और LNG के आज़ादाना बहाव को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। कराची और पंजाब के कुछ हिस्सों की तरफ जाते हुए
ईंधन से भरे जेरिकीन से लदे पिकअप ट्रक सड़क ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा है। मुझे बताया गया कि कराची जाने वाली लग्जरी बोगियों में चीसस के नीचे एक टैंक है जिसमें 8 से 10,000 लीटर पानी होता है। पहले से तय शुदा रास्ते में गर्म जेबें काटता है। एक हकीकत किसी भी दूसरे से ज्यादा ज़ायरीन को फौरी तौर पर मुतासिर करती है। न्यू गवादर डिजाइन करने वाले अफराद ने गवादर के असल बाशिंदों के बारे में फिक्रमंद होने में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया। बंदरगाह से दूर धकेले जाने की वजह से उनके माहीगीरी के लिए मंजूर शुदा इलाके सुकड़ते रहते हैं। एक मुजव्वज़ा नई सड़क मकामी कुश्ती की तामीर की सनत को तबाह कर देगी। पुराना शहर एक कचरे की तरह लगता है, लेकिन रावलपिंडी को इसकी परवाह नहीं है। बंदरगाह की तामीर करने वाले यानी चीनी नजर नहीं आते। मकामी लोग मिजाहिया अंदाज में उन्हें जोज मजूज कहते हैं। नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत साहिलों के अर्द गिर्द घूमने के बजाय वो इसके अंदर रहते हैं, जो दूर से एक जेल कैंप की तरह लगता है। एक बार प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मुझे यकीन है कि वो घर वापस आने और आज़ादी का लुत्फ उठाने के लिए बेचैन होंगे। गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक हादसाती दौरा एक हकीकी तजुर्बा साबित हुआ। एक तख्ती में लिखा है कि ये इंतहाई जदीद इदारा चीन ने 2021 में सौंपा था। ऑडिटोरियम, लेक्चर हॉल, क्लासरूम और लेबॉर्ट्रियां बेहतरीन हैं। मैंने क्रेनों, गेंट्रियों, भारी गाड़ियों और फोर्क लिफ्टों के लिए 60 से ज्यादा तरबियती समोलेटरों की गिनती की। बाद में गूगल करने पर टुकड़ा कीमत 30,000 से 50,000 तक थी। सभी नए हैं, अब भी प्लास्टिक के ढक्कन के नीचे। इस वसी लेकिन वीरान कैंपस में कोई उस्ताद, तालिब इल्म अमला नहीं है, सिर्फ चौकीदार है। किसी को अंदाजा नहीं है कि चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये तरक्की पागल हो चुकी है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है और उसका खमियाजा कौन उठाएगा? क्या पीसी एक मंसूबाबंदी की दस्तावेज थी और इसमें क्या है? इसके बावजूद गवादर की तरक्की से बिलाशुबा इन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो हमेशा जीते हैं। मुख्तलिफ सरकारी तंजीमों और उनकी हाउसिंग स्कीमों के लिए वसी इलाकों को खारदार तारों से घेर लिया गया है। नौआबादियात, जाहिर है, यहाँ इस्तेमाल करने के लिए बहुत मजबूत लफ्ज है। आइए सिर्फ ये कहते हैं कि ये अफसर कॉलोनियों के लिए जानी पहचानी ख्वाहिश है। क्वेटा और गवादर के दरमियान एक गैर मुतवक्के तसादुम के नतीजे में एक जूनियर फौजी अफसर, जो काकूल ग्रेजुएट था, से 3 घंटे तक बातचीत हुई। शानदार और काबिल तकलीद, उसने टीटीपी को जुनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादलों में मशगूल कर दिया। ठीक है, वो BLF/BLA के साथ किस तरह मुवाजना करते हैं? इसने हंसते हुए कहा, ये मुजरिम और मुहिम जो हैं। लेकिन टीटीपी बहुत सख्त गिर दहशतगर्द हैं। इसके बाद वो रुक गया। वो कहीं और लड़ना पसंद करेगा जहां उसे लोग पसंद करेंगे, यहां नहीं। दिलचस्प। इससे मेरा सवाल उठता है कि अब लोग घर वापस क्यों नहीं जाते? अमन व अमान को मकामी पुलिस और बलोच लेवीज पर छोड़ दें। उसने आह भरी। जी हाँ, ये जल्द अब देर होना चाहिए। लेकिन दोनों ही कम सहूलियात से लैस हैं, कम तरबियत याफ्ता हैं और मकामी होने की वजह से उनके खानदान ऐसे हैं जिन्हें दहशतगर्द निशाना बना सकते हैं। ये नौजवान अफसर नहीं चाहता कि उसे काबिज फौज का हिस्सा समझा जाए। परेशान होने के बावजूद वो अब भी फौज से मोहब्बत करता है। जो लोग इक़्तिदार के मरकज में हैं, वो बलोचिस्तान को कबाइलियों की दूर दराज और बंजर जमीन तस्वुर करते हैं। वो इतने अमीर हैं कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उनका ख्याल है कि उसे दूर से चलाया जाना चाहिए। इस रजत पसंद ज़हनियत से जन्म लेने वाली सुस्त रफ्तार तरक्की पाकिस्तान को दोबारा चट्टानों पर धकेल रही है। बलोचिस्तान और इस मामले में पाकिस्तान के तस्वुर को बहुत नए तरीकों से दोबारा समझना होगा। बसूरत दीगर तारीख उसके खौफनाक नुकसान को ठीक कर देगी जैसा कि उसने कभी किया था। लेकिन अगली बार कीमत अब भी ज्यादा हो सकती है। मजमून निगार इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबीयात दान और मुसन्निफ हैं। अखज़ शुदा बतारीख 11 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary.
Like, subscribe, share and comments.